નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? Today we are going to learn subject environmental studies. Standard 4th, Unit 2. The name of the chapter is Year to Year. Right? Let's see what is there in the chapter. Now, can you able to see the picture of two deers over here? The connection is from here to here, right? So, the picture itself indicates the name year to year. Now, let's see what is there in the picture. Look, who has got my ears in this picture, right? ये ऐसा बोलता है, ये पिक्चर ऐसा इंडिकेट करता है किसने मेरे ईयर्स किसके पास है. हु हैज़ गॉट माई ईयर्स, राइट. नाउ विच एनिमल्स आर देयर? एलिफेंट, जिराफ, बफेलो, डियर, माउस, रैबिट, डॉग, राइट. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. आर दीज एनिमल्स लुकिंग फनी? यानी कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि फ़नी यानी कि कुछ अलग तरह से दिख रहे हैं. यस, मुझे तो दिख रहे हैं. द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स. यानी कि आर्टिस्ट यानी कि जिसने ये ड्रॉ पिक्चर किया है, जो भी कोई पिक्चर ड्रॉ करता है उसको आर्टिस्ट बोलते हैं, राइट. इफ़ यू ड्रॉ द पिक्चर देन यू आर ऑल्सो एन आर्टिस्ट. सो द आर्टिस्ट has drawn wrong ear on the head of the animals. यानी कि जो ये एनिमल्स के हेड है, बफेलो, एलिफेंट, रैबिट, माउस, डियर, डॉग, ये जो हैं ये सब एनिमल्स के हेड्स हैं, उनमें रॉन्ग ईयर्स उन्होंने ड्रॉ किए हैं. अब ऐसे ही नहीं किए हैं, देयर इज सम पॉइंट एंड दैट्स वाई, अदरवाइज द आर्टिस्ट नोज, right, the ears of the animals. Still, intentionally, he has drawn the wrong ears. Now see, why he has drawn the wrong ears? Let's see. Describe where the animal's correct ears are located in the space given below. यानी कि हमें ये जो पिक्चर है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, ये टेबल फिलअप करना है. एलिफेंट है तो उसके ईयर्स कहाँ पे है? देखो ये एलिफेंट है, राइट. तो उसके ईयर्स कहाँ पे है? जिराफ पे, राइट. तो यहाँ पे लिखा एलिफेंट का कहाँ पे है? जिराफ पे. नाउ लेट्स सी द अदर. रैबिट. रैबिट के ईयर्स कहाँ गए? कम ऑन फाइंड इट आउट. रैबिट के ईयर्स कहाँ पे है? यू नीड टू फाइंड आउट. इसमें से मैं आंसर इसलिए नहीं दूंगी, आप देख ही सकते हो. देखो ये रैबिट, तो ये है नो, ये नो, ये है नो. क्या ये है? नहीं. इज इट दिस वन? नो. इज इट दिस वन? यस. सो दिस आर द ईयर्स ऑफ द रैबिट्स. सो रैबिट्स के ईयर्स कौन से एनिमल के ऊपर है? On the dog. So over here you have to write it down, dog. Now let's see where are the ears of the mouse. So in which animal it is? Then here is mouse and let's see where the ears are. Over here on the elephant, right. So here you have to write it down, elephant. Let's see giraffe. जिराफ के ईयर्स कौन से एनिमल के ऊपर है? सो हियर इज द जिराफ एंड हियर इज द, वेयर इज इट? हियर इज द ईयर्स ऑफ द जिराफ ऑन द रैबिट. मैंने कैसा पता किया? क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है. बट अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द ईयर्स. देखो यहाँ पे येलो है तो ऑब्वियसली
with the stripes, with the spots on it. So obviously the ears of the giraffe are on the rabbit. So you have to write it down over here, rabbit. Come on, identify the dog ears. ये dog है, right? And where are the ears of the dog? Can you able to identify from the color? Yes, over here, right? Now let's see the other one. Buffalo. It's very easy, on the deer. And the last one, deer. So उसके ears है buffalo पे, right? So you have to write it down, buffalo over here, right? I hope everybody understand this. Now the answer key will be provided in the next session. I hope everybody has understand the activity over here, right? Next session I will give the answers. Now let's see further. Different animals have different kind of ears, right? Now each and every animals has different kind of ears. Can you able to identify? आपको पता है कि buffalo के ears अलग होते हैं than dog के. So different kinds of ears have different animals. Among the animals given below, which one has ears that you can see? Right? अब यहाँ पे जो दिए गए हैं animals, उस नाम जो एनिमल्स के नाम है उनमें से कौन से एनिमल्स हैं जिसके ईयर्स यू कैन सी, इन विच एनिमल्स यू कैन नॉट सी ईयर्स. राइट द टेबल गिवन ओवर हियर, राइट. एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी. सो इस में से आपको चूज़ करना है और आपको देखना है कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिसके एनिमल्स ईयर्स आप देख सकते हो और कौन से ऐसे हैं जिसके आप नहीं देख सकते हो. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी द नेम ऑफ द एनिमल्स ओवर हियर एंड देन यू नीड टू फिल दिस कॉलम, राइट. आई होप once I read the name you can able to identify which are the animals whose ears we can see and which are the animals whose ears we cannot able to see. Let's start. Deer. Can we able to see? Yes. So write it down over here. Frog. Can we able to see? No. So write it down in the pink column. Fish. Can you able to see? No. So you need to write it down in this pink column. Ant. Can you able to see? No. So you need to write it down in the pink column. Crow. Can you able to see? No, I cannot able to see. So you need to write it down in the column animals whose ear we cannot see, that is in the pink column. Let's go further. Pig. Yes, of course I can able to see the ears of the pig, so write it down in the yellow column. Giraffe. Obviously I can able to see, so just write it down the name of the giraffe in the column of the animals whose ears we can see. Cat. Obviously yes, I can able to see the ears, so write it down over here. Tiger. I can able to see, right, so write it down in this column. Sparrow. I cannot able to see the ears, so write it down in the pink column. Buffalo. Obviously I can able to see it, and that's why it include in the yellow column. Snake. I cannot able to see the ears of the snake, so it comes in the pink column. Lizard. Oh my god, I am very scared of the lizard, but I cannot able to see the ears of the lizard, so it includes in this pink section. Duck.
I cannot able to see the ears of the duck, and that's why it comes in the pink column. Elephant. Obviously, the elephant's ears are big, and I can able to see. So it comes in the yellow column. And the very last one, that is monkey. I can able to see the ears of the monkeys, and that's why it comes in the yellow column. I hope this is very simple activity and everybody has able to do this activity. Still, in our next session we will see the answers. Do you think that the animals whose ears we cannot see really they do not have ears, right? आपको पता है जिसके ears नहीं दिखते हैं उसको ears होते हैं कि नहीं है? You just think it, right? And just note it down your answers. Now see you in the next session with the portion over here. Thank you for joining us.